Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening, Imran. Good evening, Nilesh. Keep the chat screen. We'll start in 2 minutes. Hit the like button, guys. किस किस का कौन सा ट्रेड चल रहा है, guys? बता दो. इमरान कोई ट्रेड लिया है? After 1 month, we have got back-to-back 3 days of 100 pips. Hmm. No trade so far. Just started. Okay. एक और minute. We are waiting for one person. वो आ जाने दो. We'll start. Good evening, Anjali. Let's start with the screening. नहीं नहीं रुको. Beautiful. Wait, wait. Good evening, Pankaj.
Pankaj, MTSL 87,800. Let's start with gold, daily time frame. हम्म, नहीं नहीं, वो दो लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, वो आने दो आराम से. ओके सर. स्टार्टिंग विद द डिमांड, ये हमारा प्रीवियस डिमांड था. उसके साथ ये हमारा इंड्यूसमेंट रेंज. जितना इंड्यूसमेंट रेंज में हमें यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन जनरेट होते हुए दिखी थी, उतना ही रिजेक्शन हमको यहाँ पे दिखा था. कंटिन्यूटी में वॉट एवर द मूवमेंट ऑफ डिमांड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ एक्शन, दैट विल एक्ट एज द करंट. राइट, उसके साथ कंटिन्यूटी, बिकॉज देर वॉज अ ब्रिज, 150% will act as our reversal area. Right, with this point of actions, market tend to show the buyer's allocation point and market started to move in the upward direction. Points to be taken: previous supply, रिजेक्शन कितना मिला हमें यहाँ पे, जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई जनरेट हुई थी उतना ही डिमांड यहाँ पे जनरेट होने के बाद द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ सप्लाई विल एक्ट एज योर करंट मूवमेंट. उसके साथ मल्टीप्लाइड वर्जन में अलोकेट करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके कंटिन्यूटी में ऊपर के लिए गई थी. Right, in this point of actions, what are the next step we'll be looking at? 200% markout. With the 200% markout, 150% rejection point जो ने market में दिखाई गई थी. Right, what are the next steps that we'll be looking over here? We'll be looking over here for next allocation points of 150%. With 150%, we will look for swing high low and mathematical numbers. Right, so 150% was here of us. उसके साथ रिजेक्शन के साथ कंटिन्यूटी में मार्केट नीचे के लिए आई थी. Then this will act as our current swing high. This will act as our retracement point. This will act as our low point. Right, let's do the math and check what is the market trying to indicate us at the current state of movement. Swing high minus swing low. In this scenario, what are the numbers that we are going to take? 2929.958 minus 2833.214. What is the formulative number that we have got? The formulative number is 96.744. Uske saath, what is the retracement point we are having? 2880.864. Direction is bullish, plus formulative number 96.744 into 1.618. What is the first target that we are having? 3163. मजाक कर रहा था. 3037.395. राइट, पोस्ट दैट प्लान ऑफ एक्शंस, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप? क्योंकि वो टारगेट हमारा ऑलरेडी हिट हो चुकी है यहाँ पे 37 की. द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन इज इंटरमीडिएट रेशियो व्हिच इज 2880.864. डायरेक्शन इज बुलिश, प्लस फॉर्मुलेटिव नंबर 96.744 into 2. The number we'll get is 30.3074352. So let's mark out the number over here. The number is 3074.352. Post the marking of the numbers, what are the next steps that we'll be looking at? We'll be coming down to 4 hours to check our major movement allocation points in the directions of the movement. Right? So point of action के साथ movement हमें मिली थी, उसी point के साथ what are the next steps that we'll be following at the current stage? Supplies allocate करके चलेंगे. This is the first supply. Varsha. This is the first supply that I'm taking into the पोजीशंस. रिजेक्शन कितना लिया था? जितना हमारा बेरिश मूवमेंट में लास्ट था,
that will act as our current with that point of actions. Multiply it and check it out. That will be your inducement level. Post inducement level, whatever the supply was generated, that will act as your current. With that point of action, we had a rejection. What could be the rejection taken? जितना हमारा previous red candle generation हुई थी demand यहाँ पे, उतना ही rejection point of action के साथ market will tend to continue the movement. Right? Or rejection होने के बाद whatever the movement you have got, multiply it, allocate it. This is the scenario one. Scenario one में double कर दो. Double करने के बाद 150% rejection point allocate कर लेना. Right? Once 150% allocation is done, what is the next step that we'll be looking over here? The next step we'll be looking for a rejection perspective, which is in circumstances of this will act as your current. Right? Scenario one, placed, market tend to break and continue, double it, allocate it. What do we notice? 150% and 200% rejection has been done. Next, whatever the supply has been generated at this point of action, that will act as your current. Right? We have a exact rejection at the point of actions if we notice over here. So with that rejection point, what are the next step? Inducement था, inducement कितना आएगा हमें? जितना हमारा previous demand range of allocation point था, उतना ही rejection हमको यहाँ पे दिखने को मिलेगी. With that continuity, क्या आप ये mark करोगे? नहीं. जो भी हमारा inducement में supply रहेगा, उस supply के साथ हम allocate करेंगे. Post the rejection point of angle over here, what do we notice? There is a break and continuity. What is the next step that we'll be looking for? The next step is we are looking here for a rejection point. जैसे ही rejection point मिलता है, what are the next steps that we'll be following at the current scenarios? We have a break and continuity. We will take the demand as the point of action. Rejection कितना मिला? जितना हमारा previous point of demand create हुआ है, उतना ही supply generate होगी. With that point of actions, there is a break and continuity. With the break and continuity, 150% will be the rejection point of actions. Right? 150% हमें यहाँ पे rejection मिला. First plan of actions, what you will be looking, जितना हमारा previous demand है, उतने का movement in the continuity में दिखने को मिलेगी. Break के साथ allocation of 150% again. Right? Do we have a rejection point over here? Yes, we do have a rejection point at 150% in the continuity and the breakdown. What are the next steps? अगर वो scenario follow through नहीं होती है, जितना हमारा previous demand allocation point है यहाँ पे, उतने का act of structure build होगा. Act of structure build होने के बाद continuity में movement allocation देके चल सकते हो. Right? And what are the next steps that we'll be looking? Rejection कितना लिया है market में यहाँ पे, जितना हमारा previous retracement point है, उतने का ही मूवमेंट अलोकेशन यहाँ पे बिल्ड आउट में दिखेगी. उसके साथ मल्टीप्लाई द वर्जन, 200% इज योर रिजेक्शन पॉइंट. राइट? पोस्ट दैट जितना मूवमेंट कितना आया है, जितना हमारे पास यहाँ पे अलोकेशन में दिख रही है, उतने का ही मूवमेंट पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ड होते हुए मार्केट रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में गई है. Right? So what are the next steps that you will be looking over here? This will act as your swing high. This will act as your swing low. This will act as your retracement point. Okay, so let's do the math in the current state of actions. क्या होगा? Swing high is at 3057.902. Swing low is at what point of action? 3028.190. What is the formulative number? 29.712. उसके साथ what is the retracement value we are having at the current stage? 3047.851. Right? So what are the next steps that we'll be doing? 3047.857 minus 29.712, which is our formulative number, into 1.618. What is the targets that we are having at the current state of actions? The plan of actions is looked into the consideration of 2982.613. So this is the current state of actions which we'll be looking at. Is it right one or wrong one? Wrong, correct. So what is the numbers? No blinds hitting, guys. So the numbers is 2999.777.
These are the numbers that which will act at the current point of action जहाँ से market ने rejection लिया है, right? So with this point of actions, what are the next steps that we'll be looking over here? The next step we'll be looking is an intermediate ratio. The intermediate ratio will act in the scenario of 3047.851 into plus 29.712 into 2. What are the numbers that we are getting? The numbers we are getting in the scenario of 2988.427. Right, so these are the values, and is it matching with our demand range? Yes, it is matching with our demand range. What are the next steps that we'll be following? The next steps we'll be following is in 1 hour. What is 1 hour currently doing? 1 hour is in a POI range in a bigger perspectives. क्या क्या हमें यहाँ पे दिखने को मिल सकती है? हमें यहाँ पे फर्स्ट रेंज ऑफ एक्शन में सर्कुलेटिंग सप्लाई, सेकेंड पॉइंट ऑफ एक्शन में जो प्रीवियस सर्कुलेटिंग सप्लाई बिल्ड हुआ था उसे हंट होते हुए देखा. अभी करंट स्टेट ऑफ एक्शन में देर इज टू हंट्स विच इज डन टुडे इटसेल्फ. आज के दिन में ही दो हंट हुए हैं. हाउ एंड वेयर एंड हाउ कुड यू आइडेंटिफाई द सेम? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? Right, for the structural analysis, what are the first steps that you will be looking at? Do you want to calculate the circulating supply? We can. Step 1, जितना हमारा supply है उतना लो, allocate it post the retracement point of actions, that is our rejection. What are the next steps? जितना हमारा previous supply यहाँ पे build out में दिख रही है, that will act as your current. Right, post current, what do we notice over here? Is there a break? If you want, you can consider it. If you don't want, you can leave it. Right, target is hit. But in the scenario of my previous, this is my retracement point. So what I will be doing, I'll be taking the retracement, I'll be allocating at the current state of actions. Market had given a break, with the break continuity में दिख रही थी उस point of action में, so we'll double it. 150% का rejection हमें यहाँ पे दिखने को मिली है. उसके साथ market is continued the rally. Right, post the plan of actions, what are the next steps that we'll be looking at the current plan? So ये थोड़ा बड़ा हो गया. ओके, इसके साथ व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट मार्केट विल लुक इनटू? जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई अलोकेशन पॉइंट था, दैट विल एक्ट एज द वन, एंड इन द कंटिन्यूटी post the retracement we will look for the another. So in this scenario, this will play the action from the rejection point. What do we notice? We notice a break. With the break, what did the market tend to do? Market tend to close and continue. With the continuity, where did market tend to take the rejection from? 150% of the allocation point. Right, post 150% of the allocation point, what is the next steps that you will be looking over here? ये हमारा current demand range of action में थी. जितना हमारा demand, that will act as our current movement plan. Right, so उतना ही plan of action के साथ movement generate होते हुए दिखी थी? नहीं दिखी थी या नहीं दिखी थी? Guys, जितना हमारा previous movement था उतना दिखा या नहीं दिखा? नहीं दिखी थी. Perfect. नहीं. So what are the next steps that we will be looking over here? No. So we'll not be taking this point of action. With this plan of actions, what are the steps that we'll be following over here? From the body till the bottom lineup. From that bottom lineup, we will allocate it through the retracement point of actions. With the retracement point of actions, what do we notice over here? Do we have an exact rejection of the perpendicular moment over here? Yes, we do. Right, so this is how we look into the circumstances. With the circumstances, market ने कितना rejection लिया है यहाँ पे?
एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन जितना हमारा प्रीवियस डिमांड यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखी थी उतना ही रिजेक्शन यहाँ पे हमें दिखने को मिला था, उसके साथ कंटिन्यूटी में मूवमेंट अलोकेशन में आई थी। Right, so this was the rejection, post rejection continuity. At this point of action, can we take the consideration of the previous? Yes, definitely we can take the consideration of the previous and allocate it. Right, from the wick also you can take, without the wick also you can take, but the majority of the allocations should complete this range of action at the current scenario. फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एक्शन कितना दिखने को मिला था हमें यहाँ पे, जितना हमारा एक्शन प्लान ऑफ वन यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखी थी, दैट विल बी एक्टिंग एज आर करंट. Okay, this will act as our current movement plan over here. With the current movement plan we have a rejection कितना दिखने को मिला था, जितना हमारा previous rejection point उतना ही रिजेक्शन हमें यहाँ पे दिखने को मिली थी, उसके साथ कंटिन्यूटी में अभी मार्केट ऊपर जा रही है. Right, so this is the rejection perspective what we can look over here with the rejection continuity में plan of action number 1 क्या रहेगा, previous लेना है तो swing के हिसाब से ले सकते हो. If not, what will market will tend to do? Market will first cover up the previous supply which was still in the zone, that will act as the current, and then on the break the market will continue the movement. Okay, so this is the plan of action of 1 hour. What is the levels that you will be taking under the consideration at the current stage? This will be a swing low. This will be a swing high. This will be a retracement point. Right, let's do the math and check what are the numbers that we are currently getting with 3015.081 minus 3002.598. What is the formulative number? The formulative number is 12.483. What is the retracement point that we are having? 3007.564 plus formulative number 12.483 into 1.618, 3027.74, जो कि हमारा एट द करंट स्टेज में है वो टारगेट हिट हो चुकी है. उसके साथ व्हाट इज द इंटरमीडिएट रेशियो दैट वी आर करेंटली गेटिंग? द इंटरमीडिएट रेशियो वी आर हैविंग इज 3032.512. Let's mark and check where is that number. 3032.512. सुबह का ट्रेड जहां से रिजेक्शन लिया था, that is the plan of action. Right, any doubts in gold? Right, coming down to 15 minutes, what are the next plan of actions that we'll be looking and taking under the considerations? First of all, why did the market tend to take the rejection over here? Right, let's do the math. This is the swing high, this is the swing low, and that is the retracement point. Okay, जो हमने सुबह में allocate किया था, ये हमारा swing high है, ये हमारा swing low है, ये हमारा retracement point at the state of actions. What are the numbers that we are getting at the current state of actions? Let's do the swing. 3035.900 minus 3025.622. What is the formulative number? 10.278. What is the retracement point we are having? The retracement point we are having at the current state of actions is 3030.906. With that, direction is bearish minus formulative number 10.278 into 1.618. Where is the rejection perspectives that we are having at the current state? जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन. संतुष्टि के लिए मैं आपको लेवल्स लगा देता हूँ. गुड इवनिंग सुमित, गुड इवनिंग महेश, गुड इवनिंग समर्थ, गुड इवनिंग कार्तिक. Okay, so these are the plan of actions which you guys will be following at the current state of actions.
कोई भी बोलेगा रिट्रेसमेंट का वेट करना है, बोलो लिक्विडिटी हंट हो रही है, आप रिट्रेसमेंट का वेट करोगे, आपको उड़ाएगा मार्केट. So this is gold for you guys. No doubts, no. Clear, sir. Great. What are the next steps that we'll be looking in the scenarios? BTC. इमरान, कोई डाउट है आपको यहाँ पे? गुड इवनिंग अनिरुद्ध. गुड इवनिंग अब्दुल. No doubts. We'll start with BTC. No. Okay. यहाँ पे नोटिस करना कुछ हो रहा है. इसके साथ 1 आवर में भी हो रहा है शायद. Yes. Guys, notice this point of action, huh? 1, 2. जिन जिन को पता है ये क्या है, उनको पता है क्या होने वाला है. Okay. Sir, I observed that price took reversal forming S2B1 setup. Am I correct? Yes. Definitely, Abdul. ये सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये त्रिशूल है. जहाँ जहाँ पे त्रिशूल बिल्ड होता है, आप लोगों को ही पता है क्या होता है. 1, 2, 3. That are external liquidities that are not ये selling pressure. Selling pressure तो यहाँ पे दिखी है ना. This and all are selling pressures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये जो क्रिएट हुआ है ना, वो त्रिशूल बोलते हैं उसे. External liquidity. Okay. Let's start with okay, 1 hour time frame. Because you mentioned minute details which have to be mastered, no one can go this level of understanding. Yeah, definitely, Abdul. I'll teach you. It's not that difficult. So गुरु को कॉपी करना मुश्किल तो होगा, मगर इम्पॉसिबल तो नहीं. Any book you can read. गूगल में मेरा नाम डाल देना, आ जाएगा बुक. गूगल में, अमेजोन में, कहीं पे भी. स्टार्टिंग विद डेली टाइम फ्रेम. अच्छे से खाने के बाद बोलते हो कि विल स्टार्ट. पहला लेट आया है, उसके ऊपर ताने भी मारना जरूरी है तेरे को. आई एम ईटिंग माई लंच. Okay. So daily time frame, what are the next steps that we'll be looking over here? POI range 1, entire POI range को allocate करो. पूरा entire allocation देखने के बाद look for doubling the quantity. Inducement होने के बाद allotment. With the allotment point of action, we have buying pressure over here.
with the buying pressure, what did market tend to create over here? Market tend to create, yes. So market tend to create the buying pressure. With the buying pressure, we had an internal liquidity point. With the internal liquidity point, market tend to take the rejections from the same point of action. जितना हमारा डिमांड रेंज एट द करेंट पॉइंट ऑफ एक्शन में है उतना ही मूवमेंट H2 B1 के साथ रिजेक्शन ली थी. बॉडी क्लोजर विल बी इनसाइड द डिमांड जोन. And what is this wick you are noticing? This wick is our mathematical number rejection point, hence we are taking under the consideration. With this consideration, market went on with the continuity of the supply. Rejection कितना लिया? जितना हमारा previous point of action में जितना supply create हुई थी उतना ही demand यहाँ पे build होते हुए दिखी. राइट जैसे ही प्लान ऑफ एक्शन बिल्ड होते हुए दिखा व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू विल बी लुकिंग. जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई रहेगा उतना करंट में मूवमेंट आएगी उसके साथ ब्रेक थ्रू. हाउ डू यू आइडेंटिफाई द मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन? एट दिस करंट स्टेज द मार्केट हैज गिवन द ब्रेक एंड इट्स नॉट सस्टेन्ड येट. सेलिंग प्रेशर आ रही है मार्केट में. सो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स वी विल बी डूइंग? वी विल बी गोइंग टू 4 hours to look for a major allocation point. At the major allocation point, what are the major things that you will be looking and taking under the considerations? The swing low remains the same and the swing high and retracement point will be the red candle of the starting. In this scenario, let's do the mathematical numbers and check where exactly the market is taking the rejection from. In the consideration of swing high 82207.84 minus 76639.09. What is the formulative number? 5568.75. What is the retracement point that we are having? 79056.99. Direction is bullish plus 5568.75, which is the formulative number, into 1.618. Where did the market tend to take the rejection at the first point of action? The market tend to take the rejection from 88067.22. Do we have the exact rejection point of the golden number? Yes, we do have. With that, what is the next step that I'll be looking over here? I'll be looking for a markout which will be taken under the consideration of intermediate ratio 79056.99, direction bullish plus, formulative number 5568.75 into 2. The number comes out to be 90194.49. Right, this will be my plan of action at the current stage of action. So what are the next steps that I'll be looking over here in the allocation perspectives? This is my previous supply. I will take under the consideration of this. With that point of action, this was my previous demand. With this previous demand, there was a rejection. Post rejection, there was a continuity. That is how the market tend to work at the current place of actions. Sorry guys, this was my previous demand. With the previous demand, allocation of the next, which will be taken under the considerations for the next retracement point of action. Right? So once you take under the considerations of the previous point of actions, what do you notice over here? This was again our mathematical number, where in 1 hour you will be noticing the same rejection perspectives, how the market tend to move. Right? Post this, what are the next steps that you will be looking over here? How did the market tend to take the rejection and from where? Scenario 1 of looking into the rejection perspectives, this will be the scenario 1. Multiplying it, 200% was the rejection point. With the 200% rejection point, where did you notice the market tend to take the rejection from? 150%. This is the closure one which you will be looking over here. Right? Post the closure one, what the market had tend to do? The market had created a structure plan as per the previous supply of 4 hours in the swing, continued the movement, and the target isn't been hit yet, but is point of action say rejection zarur le rahi hai because the pressure is been built in the market. Right? So what are the next steps that we'll be doing over here? The next steps we'll be working on is in 1 hour, looking for the perspectives of the rejections and the continuity. Okay. So in this scenario, what are the major steps that we'll be looking over here? The major steps will be taken under the consideration of the previous to the current. How do you work out onto that structure at first place? This is your previous demand. With the previous demand point of action, the market tend to continue. This will act as number 1.
with the number 1, market tend to break and continue, allocate the point of action, which is 2. Do we have a exact rejection point? Yes, we do have a rejection point. What is the first supply that you will be looking over here? The first supply scenario will be taken under the consideration of this green candle movement. With this green candle movement, we got a rejection perspective again. With the rejection perspective, market tend to break, right? How do you look for an allocation perspective? Do you want to take the entire movement or will you take the previous as the first? दोनों गलत है. यहाँ पे आप notice करोगे post the rejection perspective, this was your first demand allocation point, so you will be taking this as the point of action number 1, allocating the movement with the current. What did the market tend to do? Market gave a break, with the break multiplying the double. What do we notice over here? We notice exact 200% rejection, right? Post 200% rejections, what are the next steps that we'll be looking over here? The lookout will be on to the previous of the supplies. The supply one was generated at this point of action. रिजेक्शन कितना था मार्केट में? जितना हमारा प्रीवियस डिमांड जनरेट हुई थी उतना ही रिजेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. उसके साथ कंटिन्यूटी to the next, right? At the plan of action, Saturday के दिन market POI range में था, so we will leave it into the consideration of just a box range. Post the box range, market created a threshold over here and continued the movement, right? So plan of action 1 starts into this point of action. From this point of action, multiply the level, post the rejection. रिजेक्शन मार्केट में कितना लेगा? यहाँ पे जितना हमारा प्रीवियस अलोकेशन ऑफ द सप्लाई दिखेगा उतना ही रिजेक्शन लेगा, उसके साथ कंटिन्यूटी, right? At this point of action, the market gave a break and continued. So what I'll be doing, I'll be multiplying the structures. 200% will be my target point. Post the target is hit, what is the next steps that I'll be looking over here at the current state? At the current state, I will look for a rejection again. From where and how did the market tend to take the rejection? Right? So in this surplus, the first point of action will be taken under the consideration of the movements where you will be identifying the structure break. So that will act as 1, which will be in this consideration of this. Else you will take this point of action, double it, allocate it, market continued, double it, allocate it, 200% rejection was the mandate. राइट, उसके साथ मार्केट कंटिन्यूटी में गई है, सो कितना पॉइंट ऑफ एक्शन सेलेक्ट करोगे? जितना हमारा मूवमेंट अलोकेशन है उतना ही यहाँ पे डबलमेंट में दिखेगी, राइट? पोस्ट दिस द मार्केट वाज ए क्लोजर. सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 क्या होगा? मार्केट को डबल करो. इन दिस पॉइंट ऑफ एक्शन द डायरेक्ट सिनेरियो रिजेक्शन पॉइंट इज ओवर हियर on this candle allocation. Else, if you want to look into the different scenario of 2, जितना हमारा previous retracement point है उस retracement point को allocation में लो. Point 1, break continuity. In that, multiply the scenario and keep 200% rejection. उसके बाद जितना moment of allocation यहाँ पे दिखने को मिली है, that will act as 1. With that point of action, continuity, act of number 2. Right? So this is the one scenario which we'll be looking over here at the current stage. Marking galat hui hai, sorry. Right? So this is the plan of actions what we'll be taking consideration of allocations with the allocation perspective continuity. Right? So here what do we notice? We have a rejection of exact 150%. With the rejection, market hasn't given a crossover. Why there is a no crossover at this current point? Because this was our 4 hours mathematical number. राइट, गोल्डन रेशियो थी, उसके साथ मार्केट ने एक छोटा सा रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में बिल्ड आउट दिखाया. राइट, इन द स्टेट ऑफ एक्शन दिस विल एक्ट एज योर डिमांड. रिजेक्शन कितना? जितना हमारा प्रीवियस रिट्रेसमेंट पॉइंट है उतना ही यहाँ पे रिजेक्शन आपको दिखने को मिलेगी. उसके साथ कंटिन्यूटी में वॉट एवर द डिमांड इज इन द एक्शन प्लान that will act as your current. With the current there is a continuity, double it. राइट, पोस्ट डबलिंग जितना हमारा प्रीवियस एक्शन प्लान यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखी है उतना ही प्लान ऑफ एक्शन एट द करेंट स्टेज में दिखने को मिलेगा. राइट, पोस्ट द करेंट स्टेज ऑफ एक्शंस व्हाट डिड मार्केट टेंड टू डू? कॉपी पेस्ट, copy paste. Right, do we have exact rejection perspectives from 150%? Yes, we do. Right,
This is the scenario what we will be looking at. उस point of action के साथ आज के दिन में market has taken a breakout. This was in the evening session of yesterday. Closure, allocation. With the allocation, market gave a break. With the break, market tend to continue. With the continuity, what do you notice over here? Exact 150% rejection again, right? So this is the plan of actions which will be taken under the consideration before any kind of movements. Okay, so what are the next steps that you will be following at the current point of action? अगर 1 hour में आपको levels of allocation चाहिए, this will be your swing high, this will be your swing low, this will be your retracement point, right? Let's do the math and check what did the market tend to do at the current state of actions. So at the current point of actions, what is market trying to do over here? 88531.28 minus 87808.11. What is the formulative number? 723.17. What is the retracement point that we are having at the current stage? 88261.98. Direction bearish minus 723.17 into 1.618. The target is 8791. Let's look for the number of 8791.89. Where do we have the rejection exact point of action? इस point of action में rejection हो चुकी थी. With this, what is the informative of the intermediate ratio that we are having? 86816.64. Right? The major allocation point, उसके साथ market ने नीचे के लिए break देके हर एक allocations को breakout किया था. उस breakout के साथ market में यहाँ पे एक S2 B2 क्रिएट हुई थी. उस B2 के साथ मार्केट ने मूवमेंट जनरेशन शुरू की. What are the next steps that we'll be looking at the state of actions? अगर आज के दिन में ये ब्रेक होता है, the swing will get changed to this low and this high, and the swing high will remain the same. Okay. What are the next steps that we'll be looking at the current state of actions? 15 minutes. In 15 minutes, what do we notice? Does the market has a circulating supply? Yes, the market is having a circulating supply. The zone of action 1, the zone of action 2 जो कि hit हो चुकी है, but the major zone of action 3 is over here. Okay, so 3 eggshells is in the place. With the 3 eggshells, 1 is to 10, 1 is to 10, 1 is to 10 ratio. That is what the current liquidity market will try to hunt out. How will you look for the circumstances of that? Allocation of each and every point of actions which will be taken under the considerations of the S2 formulative numbers in the directions of liquidity allocations. This is my previous demand. Rejection कितना लिया market में? जितना हमारा previous demand bullish moment में था, उतना ही plan of action के साथ at the current stage हमें यहाँ पे दिखने को मिली थी. उसके साथ double it 150% rejection. Right, post 150% rejection over here, what did market tend to do? Market created a structure plan out of 1, which will be taken under the consideration of this. With this plan of action, there is a second, which has been acting at the current state of actions. Uske saath, where did the market tend to take the rejection from? 150%. Right? This is how we look into the circumstances of the moment allocations and being in the directions of the moment. What are the next steps that market will be looking over here? This is the first supply in the action. Rejection कितना लिया? जितना हमारा previous supply यहाँ पे generate होते हुए दिखी है, उतना ही rejection यहाँ पे generate हुआ था. Continuity में previous supply will be your action point. With the action point, market में कितना rejection आया फिर से? जितना previous allocation में जनरेट हुई थी, उतना ही रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में फिर से मार्केट बिल्डअप हुई थी. बिल्डअप के साथ कंटिन्यूटी ऑफ द कैंडल, double the quantity. What do we notice over here? Exact 200% rejections. What are the plan of actions that you will be looking in the consideration of the movement at the current stage? The current stage movements are taken into the consideration of a small trade action plan from the swing high 1, swing high 2, and the swing high 3. Okay, so let's do the math and check what are the numbers that we are getting. 88275.89
22 minus 88011.36. What is the formulative number? The formulative number is 263.86. What is the retracement point that we are having at the current state of actions? The retracement point we are having is 88092.77. Right, what are the numbers and payments that we'll be looking at? 88092.77 minus 263.86, which is the formulative number, into 1.618. What is the numbers that we are getting? The numbers we are getting at the current stage of actions at the current plan is 87665, जहां से rejection आपको अभी दिख रही है. Right, these are the small targets that you can look into the considerations, not the bigger ones. Right, 87665.841. And what is the second plan of action of intermediate ratio? Multiplied by 2. What are the numbers that we are getting? 565. Any doubts in BTC? Hit the like button, guys. क्या काम किया सर आपका त्रिशूल में? Abdul, give time, you will get what's happening. Clear, that was some explanation, sir. I took at 88016 short, 400 points running. Beautiful, guys. आपके सामने ये दिख रहा है TP1 क्या है? Right, break होके consistency में जाती है, then 86 850. Okay. क्या कर रहा है? Hit the like button, guys.
And all the new members, welcome to the stream. कोई भी doubt है, please do ask. If you're learning from the stream, if you're liking the stream, if the content is good, do hit a like, share, and subscribe. Good evening, Hans ji. कैसे हो? Good evening, Patel. How are you? So true, Nilesh. Sir's voice box is back in the action. Good evening, Simon Raj. Welcome to the stream and the family. Hope you're enjoying the stream and you're learning from the stream. सुमित, त्रिशूल अभी मत देखो, ठीक है? त्रिशूल तभी जनरेट होगा जब मार्केट रिवर्स होगा, right? That is how you look into the circumstances. So daily time frame के इंडिकेशन के हिसाब से वो 1 hour में दिखाया था, right? So in detail में I'll explain you some other day, but it's a beautiful thing, huh? It is called an external liquidity. And you can look this only in cryptos. Don't hunt it in Indian markets, don't hunt it in crypto, sorry, commodities में hunt मत करना, सिर्फ cryptos में hunt करो, मिलेगा. And risk to reward with the Trishul is 1:100, huh? If you identify the right Trishul. 10,000 पॉइंट की मूवमेंट आती है उस पॉइंट ऑफ एक्शन से, दिखाता हूँ, आप लोग हंसोगे. 10,000 पॉइंट कम टू 1 hour, कहाँ पे बिल्ड हुआ है त्रिशूल, राइट? 23rd को बिल्ड हुआ था त्रिशूल यहाँ पे, राइट? व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? This is the moment of allocation, right? 5,000 points, 50x, right? Trishul again, 40,000 points, sorry, 4,000 points, 40x. Trishul, 4,200 points, 42x. Major Trishul, 12,000 points, 120x. हाँ, इंट्राडे में नहीं मिलेगा, राइट? स्विंग ट्रेडिंग में मिलता है वो. सिमन, कोई भी डाउट है प्लीज डू आस्क. बीटीसी में नहीं रखा क्या? सॉरी सॉरी, मैं बैड. सॉरी गाइस.
अब्दुल स्ट्रीम पे हो? Sumit, threshold is only for BTC and should be looked in 1 hour time frame only. Okay, sure, got it. Thanks, Sumit. Can you please check today's morning 15-minute chart in BTC 9:15, 9:30, 9:45 candles? This will be considered as BS2 B1, right? Color doesn't matter. 15 minutes Indian time frame में देखते हो ना? Yes, this was S2 B1 setup. पंकज ने यहाँ से ही तो एग्जीक्यूट किया था. I still remember his entry 87 175. He has got 1000 points in the moment. Very good evening, Smita ma'am. एग्जीक्यूशन के टाइम पे सही से आ जाते हो. नहीं सर, 87 115. मैंने क्या बोला? 175 बोला ना. हाँ, 30 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकता है. चलो, तुम्हारे हिसाब से भी मार्क कर लेते हैं. तुम्हारे हिसाब से 1178. मैं जो नंबर बोला उस हिसाब से 75. 1115. 30 पॉइंट में क्या लड़ रहे हो तुम मेरे साथ? हम्म. Beautiful rejection from the mathematical number. Loving it. MTSL तो चलती है. हाँ. Hit the like button, guys. अगर मैंने तुमको बोला था कि लाइक 300 पॉइंट ऊपर नीचे बोला, वो अलग से ना है. मैं 30 पॉइंट की ऊपर नीचे बोल रहा हूँ. ये MTSL नहीं, मस्ती. ओके. वहां पे मेरे को MSTI दिखा ना. आई थॉट आई इज लाइक L. तो MTSL. What did you eat for lunch at 6 p.m., sir? Black potatoes.
किसके साथ खाते हो उसे? कैवियर के साथ। आप लोग मेरे को एक चीज बताओ, $10 की अकाउंट 4 दिन में कितना ग्रो हो सकता है? In 4 days, how much can a $10 account can grow? गलत। With your method, it can be 16 times. गलत। Wrong summer, wrong summer. थोड़ा बड़ा सोचो। गलत। बड़ा सोचो यार। गलत पकड़। रॉन्ग रॉन्ग। मेरी अंडरस्टैंडिंग की रीच अभी उतनी ही है। Give me the numbers, guys. Give me the numbers. 1500x गलत। Have done $30,000 from $10 in 6 days. पटेल उधर 50,000 आ गया है, आप 15,000 में अटके हो। Congratulations to Harshit. $75,000 in 4 days. Keep it up, Harshit.
हंस क्यों रहे हो पटेल? 100K नहीं, उससे थोड़ा कम हो, ज्यादा नहीं। वो अरुंधति मैम का था, 1 हफ्ते में। Is that on leverage? 200 leverage? So no. Power of compound. Yes. RB, that's out of my mind. Okay. Sumit. Ooh. LTD में है वो? हाँ, LTD में है. The leverage is 1:2000 that he has worked out. That is like a full-fledged flip till you lose everything. There was nothing to lose, Mahesh. His fifth trade was from $1,000. That's the power of swing trading. Yes, compounding is there definitely. Those trades were in BTC or gold or both. Started with gold. Currently, that same trades is running with BTC and gold. $3,000 होने तक वो gold में था. Then he started with BTC because BTC leveraging is at 1,000. Sorry, 1:400 with the proper risk management. My starting capital is $10, bro. Which it's $10. Is it feasible to do? No. Is it possible to do? Yes. I'm not recommending anyone to do that, please. Follow the rules. यहाँ पे लिखा है, देखो, इसे फॉलो करो. अगर यहाँ पे ब्रेक किए ना, देख लो बाद में. Things to build the mindset. Work on this first. Okay, that was an achievement, so I said. No way, sir. I will lose $10 and maybe add a two more set of $10.
I'm not in Bangalore. Excuse me. गोल्ड का चार्ट दिखा दो सर। जिनको भी फिर से धूम मचाना है। किसी को भी जो भी डाउट है, प्लीज डू आस्क। ओल्ड मेंबर्स डू द बैक टेस्टिंग, डू द फॉरवर्ड टेस्टिंग। डाउट्स लिखो, डाउट्स लिख के पूछो। And all the new members, welcome to the stream and the family. Whatever doubts you're having, please do ask. If you're learning from the stream, if you're enjoying the content and the live, do hit a like, share, and subscribe. गैस मेरे को एक चीज पूछना था, आप लोग ही बताओ। मेरा और आईटीसी में आईसीटी का कॉन्सेप्ट सेम है क्या? Nah, no, no, no. Hi Avi, welcome to the stream. You're messaging for the first time, right? नहीं, किसी ने बोला, उसके लिए पूछा। नॉट एट ऑल, जमीन आसमान का फर्क है। किसने बोला? किसी ने नहीं। किसी ने बोला है तभी तो पूछा है। नहीं यार, चल। सर आपने ये कॉन्सेप्ट खुद बनाया है? यस। कुछ भी कॉमन नहीं है। आप और आईसीटी में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप और सिटी में आप बेहतर हो। नहीं, एक चीज कॉमन है अभी। चार्ट्स।
मैं न्यू ज्वाइन हुआ हूँ आपके स्ट्रीम में। वेलकम टू द स्ट्रीम। लेफ्ट हैंड साइड में रूल्स लिखा है, फॉलो द रूल्स। ओके, मुश्किल नहीं है, आसान है। ओके, फॉलो कर लेना। आप क्यों हंस रहे हो पटेल? हाउ लॉन्ग आर यू ट्रेडिंग फ्रॉम अभी? फोर इयर्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। कोई भी डाउट आएगा ना बैक टेस्टिंग करते वक्त, फॉरवर्ड टेस्टिंग करते वक्त, प्लीज डू आस्क। ओके, सर निफ्टी में सुबह में ट्रेड लिया था। हाँ, सेलिंग प्रेशर जैसे ही जनरेट हुआ ना, थर्ड कैंडल में एग्जीक्यूशन। बिकॉज सर मेरा भी चार्ट 2 इयर्स से आईसीटी जैसा ही है। लेकिन आईसीटी इतना समझ नहीं आता जितना आप सिंप्लीफाइड करते हो। मैं कॉम्प्लिकेट ही कहा करता हूँ। आप लोगों को 3 नंबर सेलेक्ट करना है। बुलिश है तो ऐड करना है, बेरिश है तो सब्ट्रैक्ट करना है। एक नंबर निकलेगी, तो उसके साथ 1.618 और 2 को मल्टीप्लाई करना है एंड टारगेट हिट। इस मंथ लाइव स्ट्रीमिंग भी ग्रीन में क्लोज करेंगे डेफिनेटली। एंड गुड न्यूज गाइस, लास्ट मंथ एवरी डे वाज अ ग्रीन डे। जब से लाइव स्ट्रीम शुरू हुआ है, विल कंटिन्यू द सेम। एसएल जाएगा। जिस दिन जाएगा ना अरुंधति मैम, उस दिन बताना। Yes, two candles, 15 minutes, bearish pressure created in Nifty target on point. Yes. देखना चाहोगे? रुको, I was literally waiting. भाई मार्केट नीचे आने से पहले बेरिश प्रेशर दिखाओ, उसके बाद ही ट्रेड ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। सब लोग चढ़ गए थे एलटीडी में, शॉर्टकट रोड दो, शॉर्टकट रेड दो। व्हाट ए वेट दैट वाज।
हो नमस्कार जनाब, वेलकम। कैसा चल रहा है कॉलेज अविरल? हाउ इज इट गोइंग ऑन? यस, वांट टू सी द निफ्टी ट्रेड, मिस दैट इन द मॉर्निंग, नो वरीज, दिखा दूंगा। क्या रिजेक्शन लिया, मजेदार। एंड क्या पोजीशन क्रिएट किया बाइंग प्रेशर का, मजेदार। आई लव्ड इट। सबसे ज्यादा मजा किसमें आया पता है? बैंक निफ्टी प्रीमियम क्या ब्लास्ट हुआ है डेल्टा के साथ। गुड एंड नॉट गुड, क्या हो गया? सब ठीक? राइट, दिस वाज द मोमेंट, क्या हो गया? राइट, दोनों में प्रेशर ऐसे बिल्ड हुआ है ना, इतना अच्छा इंडिकेशन। इंडिकेशन वन, बैंक निफ्टी सेलिंग प्रेशर। ओके, निफ्टी में मेजर सेलिंग प्रेशर इस दो कैंडल में दिखी थी। राइट, S2B1 सेटअप क्रिएट हुआ, एग्जीक्यूशन इन दिस रेड कैंडल। यहाँ पे थर्ड कैंडल, यहाँ पे इंडियन मार्केट डिस्कस कर लो। इंडियन मार्केट में क्या रखा है? आप लोगों को स्विंग ट्रेड करना नहीं है, आप लोगों को चाहिए क्विक ट्रेड्स। दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर क्विक ट्रेड्स। एंड सी द रिजेक्शन, सुमित, एग्जैक्ट 1.618, एग्जैक्ट 1.618। ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन है, यहाँ पे डिमांड क्लोजर है, वो डिमांड क्लोजर के लिए आ रहा है। Before coming down, did the market give the indication of the selling pressure? One and one, right? That is when you have to look for an execution towards the short, not prior to that. Okay. इमरान, MTSL पॉइंट लेके 87,854 के पास रख देना। ट्रेड के लिए नहीं,
कह रहा सर, आपके चैनल पर ही स्विंग हो सकता है, वो आइडिया आ गया है। थैंक यू सो मच। तुम्हें थे ना जो पहले बोले थे कि ऑप्शंस में स्विंग कौन करता है सर? हाँ। भाई साहब, ये तो शुरुआत है, अभी जादू होना बहुत बाकी है। आप सीजनल ट्रेडिंग के हिसाब से क्या देखे हो? हाँ, कुछ नहीं देखे हो। इस चैनल में आएगा सीजनल ट्रेडिंग क्या होता है दिखाने के लिए। रुक जाओ, समर शुरू तो होने दो। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, दूसरा सब कुछ चेंज हो जाएगा। यस, 87,850 पे MTSL है मेरा। अंश जी, कोई डाउट है आपका? कैसे चल रहा है आपका ट्रेडिंग? नितेश, हाउ मच डू यू ईट? हे ह्यू, बी क्वाइट। अप्रैल स्टार्टिंग। अप्रैल स्टार्टिंग में नहीं दिखाऊंगा, अप्रैल एंड में दिखाऊंगा। एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद स्प्रिंग में डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। नो ट्रेड सो फार। ओके। गोल्ड में देखने को बोला था, वो नहीं देखे? ये वाला थर्ड कैंडल S2B1 के साथ नहीं देखे हो तो दैट्स फाइन, हरी में मत लेना, रनिंग में मत लेना। ठीक है। सर, आप नेटफ्लिक्स पे ट्रेडिंग का सीजन रिलीज कर दो। ये नेटफ्लिक्स क्या होता है? कोई ट्रेडिंग चैनल है क्या? जस्ट किडिंग गाइस। या, और वीकेंड पे वेट का, वीडियो का वेट करते करते मेरा वेट कम हो गया। आप सर अभी उसी, उससे भी लंबा खींच रहे हैं। नहीं नहीं, मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ। सीजनल ट्रेडिंग के हिसाब से सीजनल में ही आएगा ना। अगर बोलो आम का सीजन है, राइट? आम का सीजन में आम मीठा कब आता है? अल्फांसोस कब मीठे होते हैं? स्टार्टिंग में ही या बीच में? बीच में ना, तो रिलीज बीच में ही किया जाता है।
गोल्ड 60 पॉइंट्स रनिंग, 60 पिप्स शॉर्ट, ग्रेट। एमटीएसएल फॉलो करो। हाँ पता है, नेटफ्लिक्स क्या है पता है। The only company which beated Boomerang, and it's the top in the industry at the current stage. उसमें क्या होता है वो नहीं पता। $160 बिलियन का करंट वैल्यूएशन चल रहा है वो पता है, उसके अंदर क्या रहता है वो नहीं। इतना पता है, सीरीज सीरीज सब रिलीज होते हैं उसमें। So you don't watch Netflix? No. Prime? No. Hotstar? No. IPL? No. Social media? No. सोशल मीडिया वो भी सिर्फ यूट्यूब वो भी आप लोगों को सिखाने के लिए उतना है। नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो स्नैपचैट। एवरीथिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन। आई लाइक ओनली वन डिस्ट्रैक्शन। जब वो मैसेज आता है ना, 8 डिजिट्स क्रेडिटेड, 9 डिजिट्स क्रेडिटेड, 6 डिजिट्स क्रेडिटेड, दैट ओनली डिस्ट्रैक्शन आई लाइक इट। सिर्फ वो एक ही डिस्ट्रैक्शन मेरे को पसंद। कब तक? जिस दिन मेरे को ये बनक हो गई कि मेरे अकाउंट में कितने बैलेंस है, उस दिन तक। So you don't know what's your account balance? No. प्राइस टैग देके के वही इंसान खरीदता है जिसको पता है उसके बैंक अकाउंट में कितना है। हम बिना वक्त घड़ियाल देख के काम करने वाले इंसान, तो हम प्राइस टैग देख के चीजें नहीं खरीदते। पसंद आया खरीदते, नहीं पसंद आया नहीं खरीदते, कीमत जो भी हो। ब्रेक हो गया, कंटिन्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन इज 87,000 BTC। Pankaj, MTSL at 87,900, system trailing at 88,000. Hit the like button, guys. चलो यार, आज से बोलना भी बंद कर देता हूँ। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब। बोर हो गया बोल बोल के। अब्दुल गोल्ड, किस तरफ बैठे हो?
एक लाइक, एक लाइक आ जो आता है किया था मैंने. Now, sir, in this scenario, how we will put supply and demand? किस में बोल रहे हो? Wait for level was late a bit. No worries. किस में बोल रहे हो? रिंकू, सॉरी अनिरुद्ध. बीटीसी में. बीटीसी में फिर से क्यों लगाना है आपको सप्लाई एंड डिमांड? 1 आवर में लगा के तो रखा है, राइट? 1 आवर का टारगेट 86,815 है ना, एज पर द मैथमेटिकल नंबर. यहाँ पे है ना, सॉरी 87,665, 87,565. दिस आर द नंबर्स, नेक्स्ट नंबर्स. वो होने के बाद 1 आवर का टारगेट, 1 आवर का नंबर्स पे काम करो. ये है 1 आवर का टारगेट, राइट? अगर आपको लगाना ही है सप्लाई एंड डिमांड इन द सिनेरियो, दिस विल बी योर फर्स्ट सप्लाई, sorry, that will be your first demand. With this demand you will look for the next. First demand, रिजेक्शन कितना लिया मार्केट ने? जितना बुलिश मूवमेंट में लास्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट था, that acted as your current retracement point. With this point of action, this will be your first point. रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन होने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट जनरेट हुई, रिट्रेसमेंट अलोकेशन, continuity of the previous. That's how you look into the structure. अब्दुल, आपको बुक्स देखना था ना, दिखा देता हूँ बुक्स. थैंक यू सर, नो वरीज. Yes sir, I checked cover page. Okay, देख लिया, then it's good. Okay, so this is the points. The unbreakable and another one is the crypto. ठीक है? Yes sir, I checked cover page. What's the most expensive thing you are currently having? Time. This time won't come back. Nitesh, philanthropy.
नितेश फिलेंथ्रोपिस्ट बन जाओ, वक्त है उसके लिए। बनेंगे जरूर, दैट्स देयर इन माय विजन बोर्ड। अभी क्या करोगे अनिरुद्ध? यहाँ पे कंटिन्यूटी में ब्रेक हो रहा है, सस्टेन होता है नेक्स्ट 10 मिनट में, दिस विल बी योर अलोकेशन पॉइंट, 150% will be your target one. Okay, that's how you look into the circumstances of the allocations. प्रीवियस कैंडल के रिजेक्शन की वजह से हार्ट बीट बढ़ गया था। अगर एक कैंडल के रिजेक्शन की वजह से तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ रहा है, ट्रेड ही मत करो। एंड यहाँ पे जहां से आपने एंट्री लिया है वो उधर एसएल हिट हुआ ही नहीं एट फर्स्ट प्लेस। ठीक है, 6 पॉइंट का रिजेक्शन लिया। हम भी कहा हंसो मत एट फर्स्ट प्लेस। ग्रीन में 6 पॉइंट का रिजेक्शन लिया है, लाल में नहीं। ठीक है, अभी भी वो तुम्हारा ट्रेड 6 पॉइंट के साथ ही चल रहा है, सो चिल। अच्छा खासा क्लोजर मिलेगा हमें यहाँ। इमरान सीटीसी प्लस 10 पॉइंट्स पे ले, सॉरी 10 पिप्स पे लेके आ जाना। ओके, ब्यूटीफुली रनिंग एट 80 पिप्स एज ऑफ नाउ। सीटीसी प्लस 10 पिप्स विल बी योर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अलोकेशन। मार्केट में बाइंग प्रेशर आ रहा है। अगर एक कैंडल विक पे क्लोज होता है तभी ही बाइंग प्रेशर आ रहा है, वरना नहीं। अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस वाई।
लेट मी शोकेस यू वाई एट फर्स्ट प्लेस. ये विक क्यों आया था दिखाता हूँ. राइट, लेट्स प्ले द वॉल्यूम. व्हाट डू यू नोटिस ओवर हियर? इतना बड़ा विक आया. 1 आवर पे आके देखते हैं उसे. डू वी हैव ए स्ट्रक्चरल ब्रेक चेंज? नहीं. राइट, मेजर आइसबर्ग ऑर्डर्स कहाँ कहाँ पे रिवर्सल पॉइंट, कहाँ पे अलोकेशंस पे दिखी है हमें. राइट, सो इन दिस पॉइंट ऑफ एक्शन दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ 25th, कल के दिन की 2 बजे यूटीसी पे. राइट, यूनिवर्सल टाइमिंग. Mark out that candle. What is the pressure that you are having? Selling pressure. Right, उसके बाद entire movement structure is tangent. अगर इस पॉइंट ऑफ एक्शन में तुम हमें बोल रहे हो कि ये रिवर्सल पॉइंट ऑफ एक्शन बाइंग प्रेशर दिख रहा है, तो आप गलत हो. हर एक पॉइंट ऑफ एक्शंस पे जहां जहां पे वॉल्यूम लो है, अलोकेशंस देख लेना, सेलिंग प्रेशर है मार्केट में. 1 सेकेंड अलोकेशन पॉइंट, सेलिंग प्रेशर. थर्ड अलोकेशन पॉइंट, सेलिंग प्रेशर. और क्या चाहिए उसके साथ? द मैजिकल वुंड, उसे भी डाल दो, पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हुआ है. क्या हुआ है, सॉरी. राइट, लेट मी रिमूव द ड्रॉइंग फॉर ए मोमेंट. राइट, बॉक्स 1 लाल, बॉक्स 2 हरा. राइट, मूवमेंट कितना हुआ है? दिस इज द कैंडल. क्लोजर 1, क्लोजर 2. इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर दिखा है विदाउट एनी वॉल्यूम्स, तो डायरेक्शन बेरिश होगा ना, बुलिश कैसे होगा? कुछ भी बोलते रहते हो, कुछ भी एनालिसिस करते रहते हो. ब्यूटीफुल गाइस. किसी को भी कोई डाउट है, प्लीज डू आस्क. ऑल द न्यू मेंबर्स, वेलकम टू द स्ट्रीम. जो भी डाउट है पूछ लेना.
सर आप स्लीप कितने आवर्स की लेते हो? 3 आवर्स। We were doing the small back testing, right? $5 का ट्रेड, राइट? आप लोगों के लिए बैक टेस्टिंग कर रहे थे। $5 का ट्रेड विद द कंपाउंडिंग इफेक्ट विद इन 15 minutes, $500. We will release the strategy very soon. और एक 50 बार हो जाने दो। How to grow your account. Imran, MTSL point at 3022. Okay. मत रिलीज करो। क्यों अरुंधति मैम? बोलेंगे फेक है। वो लोगों का सोच है ना। क्या वाला पटेल? कितना ट्रेड में हुआ नितेश? 5 ही ट्रेड पंच किया है मैम।
कॉम्पाउंडिंग फॉर्मूला के थ्रू एग्जीक्यूशन थी। ब्यूटीफुल। 20 minutes, $1,300. Keep it up. हंस रहे हो, खा रहे हो? खा रहा हूँ मैं। हंसूंगा। From 5:30 you are eating. Yes. And BTC also. And I didn't close BTC as well. Good job, Imran. आप लोगों ने fear भगाया है. That's the first big win for me. Keep it up. Shrimp will be there for next 30 minutes. जो भी doubt है पूछ लेना. क्या जादू किए हो सर मार्केट में? मैं कुछ जादू नहीं किया हूँ। आज के दिन में भी डे क्लोज होने वाला है 200 पिप्स के साथ। सर 850 पे एमटीएसएल था, मार्केट वेंट देयर बट आई डिडंट क्लोज इट। इमरान, 850 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा आप क्लोज कैसे करोगे एट फर्स्ट प्लेस? वो सिर्फ उधर तक गया, विक लेके नीचे आया। देखोगे इस पॉइंट ऑफ एक्शन में इट क्रिएटेड द विक, इट डिडंट क्लोज, सो यू हैव डन इट राइट। लवली गाइस। 150% TP2 hit, 200% next hit होगा, that will be the closure of TP3. Anirudh, hope you understood how the analysis were done at the current stage of actions. Pankaj, MTSL at 87600. Okay, system trailing at 8700. Thousand points, 1000 points in BTC. ठीक है, कुछ नया बताओ जनाब। कोई तो बता दो यार, एसएल हिट हुआ करके, और थोड़ा इंटरेस्ट आएगा काम करने में। ब्यूटीफुल। 8705 भी ब्रेक करने वाला है। आईजी में ब्रेक हो चुका है 8705, यहाँ पे भी ब्रेक होगा। 86900 भी ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे भी ब्रेक होगी।
सर लोग आपको भी सर लोग आपको अभी से ही कॉपी करने लगे. There is a guy on YouTube name called as Candle King. Allocates supply and demand similar to you. Okay, beautiful. No worries, Ankit. अगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई कोर्स बेच रहा है तो बता दो. राइट, विल पुट द डेफर्मेशन केस ऑन देम. एज सिंपल एज दैट. अगर कोर्स नहीं बेच रहे, सिखा रहे, वेल एंड गुड. सिखाने दो. सही से सिखा रहे, वेल एंड गुड, सिखाने दो. अगर कोर्स कोर्स बेच रहे तो बता देना, डेफर्मेशन केस ऑटोमेटिकली लीगल टीम के थ्रू चले जाएगा. ट्रेडिंग व्यू में अभी तक 86,900 आया ही नहीं है, बट आपको 5 मिनट पहले ही पता चल गया. यस, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग हबीबीस. 86,740 target hit. Beautiful, guys. What is the next demand that you will take into the position? We will draw and look out for the skeleton. Over here, the mirror will be acting in surplus of this. This will be our next point of action in the target. Okay, this is boring. Let's do something new. Let's hunt for the insider liquidity. Right? One, two. सर ये क्या है, जादू है क्या? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Let's start allocating. Come on, boys. This is the high point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 50% से एक छोटा सा रिवर्सल, उसके साथ कंटिन्यूटी. 11. Okay. Sir, what is IG? IG is one of the financial groups where you should have more than $13 million to get into the execution perspectives. I think you see price on IG markets. No, Imran, IG markets is the sister company of IG groups. Okay. So that is for retailers. So there is one more thing which is called as IG Group Financing House, Singapore based. Look for that.
and you see the numbers of that company, you will understand. Once you enter to their page, you will see the numbers. You won't see any kind of selling over there. Sumit, hope you understood how does the movement get into the play, huh? If Sumit is there. Yes, I'm getting familiar with this. Thank you. Great. जनाब, बिल्कुल भी मेरे अगेंस्ट में मत बैठो. हमारा टारगेट अभी बहुत लंबा है गोल्ड में. हमारा टारगेट यहाँ तक है, ग्रीन लाइन तक. सो प्लीज लॉन्ग के तरफ तो मत देखो. गोल्ड में सबका MTSL 0.3019.500 पे होना चाहिए. सिस्टम ट्रेलिंग एट 3023.500 which is 110 pips. Okay. 1 आवर का TP1 से रिजेक्शन ले रहा है. ब्यूटीफुल. कौन सा पर्सपेक्टिव? Perspective 1, in the scenario of allocation, swing high, swing low, retracement point, उसका TP1 आके ये था, right? Which is intermediate ratio. वहां से रिजेक्शन ले रही है, बट बहुत जल्द ब्रेक होने वाला है. नितेश, तुमने स्क्रीनिंग शुरू होने से पहले ही बता दिया था ना? यस यस मैम. सेम ट्रेड. पटेल, कोई डाउट आ रहा है? प्लीज डू आस्क. यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मिलेगा, बहुत बढ़िया वाला. क्यों?
हर एक रिटेलर्स के आंख में ये दिख रहा है यम, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, राइट? डायरेक्टली नहीं जाएगी। शिट यार, वो $5 वाला ट्रेड का MTS लेट हो गया मेरा। इट्स सो बैड। आप खुद बोलते हो बुरा मत मानो, तुम खुद बुरा मान रहे हो। मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, वो एक्सपेरिमेंट था, वो फील ले रहा हूँ मैं उतना ही। कितने में क्लोज हुआ? 1150 में क्लोज हुआ। देखते हैं कितना लेके जा सकते हैं $5 से। यहाँ पे S2B1 का सेटअप क्रिएट करेगा अभी नेक्स्ट 2 कैंडल में, ठीक है? स्ट्रीम विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। जो भी डाउट है प्लीज डू आस्क। योर त्रिशूल इज अमेजिंग इन BTC। थैंक यू वरुण। सर SL हिट नहीं हो रहा, आई एम थिंकिंग एंट्री पॉइंट पे ही SL रख लेना। क्यों इमरान? Why you are changing your psychology? Please don't do. Follow the rules. 40 pips in London and New York, 20 pips in Asian session. Okay, Imran? But अभी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ ना सर, ओनली क्लोजिंग पर ही ट्रेड क्लोज होगा ना सर। यस दैट्स राइट, दैट इज एक्चुअल रूल। ये आप लोगों के लिए ट्रायल ये कर रहे हैं ना, $5 का, उसमें कैसे काम करना है करके वो देख रहे थे, उसमें हिट हुआ वो बोल रहा हूँ। एंड डेफिनेटली यहाँ पे S2B1 सेटअप क्रिएट होगा। नो सर, यू आस्क्ड SL हिट होता है। नो सर, यू आस्क्ड SL हिट होता है नहीं। ओके सो नो सर, यू आस्क्ड SL हिट होता नहीं है, दैट्स व्हाई आई सेड एंट्री पे ही रखेंगे तो हिट होगा। ओके गॉट इट। सॉरी फॉर माय हिंदी। ओके पटेल, रूल्स में कुछ चेंज नहीं है। ओके वो आप लोगों के लिए स्मॉल अकाउंट्स में कैसे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना है उसमें हम कंपाउंडिंग में ट्राई कर रहे थे ना, तो उसके लिए उधर कुछ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे थे, तो स्ट्रक्चर बिल्ड होते होते वो हिट हो गया। बट डेफिनेटली 2-3 दिन में वो भी सॉर्ट कर देंगे। इतना टाइम लाते कहाँ से हो? दिन में 24 आवर्स है, एक दिन में, उससे ज्यादा टाइम थोड़ी चाहिए हमें।
पंकज MTSL को 87,500 87,400 में रख लेना. सिस्टम ट्रेलिंग एट 87,600. ओके. गाइस सिस्टम लैग हुआ क्या अभी? इवनिंग सेशन में सिस्टम लैग हुआ है? हुआ तो बता देना, या हुए तो बता देना. सर, आर यू फ्रॉम कर्नाटका? आई एम जस्ट आस्किंग. नो सर. वर्षा, एक मार्कआउट किया है. अभिषेक या श्रेया को बोल दो इसके ऊपर एब्रिवेशन काम करने के लिए. ओके, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. Only when Indian session was explained, bit lagged there. Okay. नहीं नहीं, सिर्फ ये दो कैंडल पे काम करने वाला. ये रेड वाला कैंडल UTC 8 बजे सुबह का, एंड ये करंट वाला कैंडल ग्रीन कैंडल 2 बजे. We are from Mumbai, right? But I have worked in Bangalore, so I can speak Kannada as well. हाँ Imran, definitely I will teach you that. Okay. It will be called as order hunt. फर्स्ट वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हंट करेगा, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर को हंट करेगा, उसके बाद मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर बिल्ड करेगा, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक जनरेट करेगा. पोस्ट हंटिंग दिस ऑल will be called as order hunt. It's already in the action. In BTC 15 minutes, there is a big red candle. So to mark this demand, which previous demand should we consider? Right? See, this was the first plan of action. Till here you are clear, no? 87,102.72. You're clear with this? Nilesh? Clear है तो बता देना. We'll move to the next.
Yes. So in this scenario, this was the double quantity. Okay, let's remove this aside. Take the entire movement of this demand till the rejection point, double it, allocate it. Okay. Market gave a break, sustained, continuity, double it, 150% rejection point. Okay. This will be the current scenario. आपने सही कहा सर, ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया गोल्ड में. रिटेलर्स को उतना आसान तरीके से पैसे नहीं देगा. होप यू गॉट द पॉइंट, नीलेश. Which previous demand is working under the current scenario? Okay, got it. Great. वन आवर पे आओ, स्विंग चेंज करो. ये रेड कैंडल, सॉरी, ये रेड हॉरिजॉन्टल रे के नीचे अगर क्लोज होता है, swing high, swing low will be this green candle, and this will be your retracement point. Okay. I'll showcase the marking weight. This will be your swing high, this will be your swing low, and this will be your retracement point. So कोई बता सकते हो mathematical number for this, please? Or else you can take this as the swing high. Okay. Please, if anyone can share me the mathematical number, that will be great. नहीं नहीं अरुण जी मैम रहने दो. Swing high is 88,192.25. Swing low is 87,046.63. Retracement point is 87,673.57. Streaming will be there for next 5 minutes. जो भी doubt है, please do ask. नितेश, कंसोलिडेशन में ही तू 1,500 पॉइंट निकालता है. अगर तेरे को डायरेक्ट मूवमेंट दे दिया तो तू क्या करेगा? स्मिता मैम, आई विल चिल एंड एंजॉय. सिर्फ एड ऑन क्वांटिटी चलती रहेगी हमारी ट्रेड्स में.
गाइस वेटिंग फॉर द नंबर, कोई भी नंबर बता सकता है ऑफ 1 hour. Swing high is 88,183.58. Swing low is at 87,046.63. And the retracement is 87,664.96. Sorry, 85697. Thank you, Mahesh. 85697. Beautiful. Exactly वो मेरा inside liquidity का level है. What is the another level? Intermediate ratio 85232. Lovely. कोई एक कैंडल मिस किया होगा मैंने. Yes. Thank you so much, Mahesh. Imran, MTSL at 87,000. System trailing at 87,300. Okay. Thank you for teaching us the external liquidity so-called threshold. Pleasure was mine. Thank you, ma'am. हाँ वो यही लेवल है ना. यहाँ पे देखो बेरिश मूवमेंट का 3014 3010. That is the first target of the gold. ब्यूटीफुल गाइस, 86,200 पार हो चुका है. सॉरी नहीं, ये 15 मिनट का नहीं है, ये 1 आवर का टारगेट है. जो महेश ने शेयर किया ना, दैट इज 1 आवर टारगेट. 85,688. नितेश इसका वीडियो बना के डालो.
मैम रोज मेरे को 3 3 वीडियो डालने पड़ेंगे, चुप रहिए मैम आप। एक वीडियो नहीं बन रही है, आप 3 3 वीडियो एडिट करने बोल रहे हो टीम को। 1500 points running in BTC. Good job. And 180 pips running in gold, correct? सर वो मैसेजेस आना बंद हो गया ना। हाँ वो सर्वर खत्म हो गया ना। नो अनवांटेड मैसेजेस विल कम नाउ। सो आई एम कूल। जो आप लोग बोलते हो वही करेक्ट। उसका MTSL पॉइंट आके 3020 पे रख लेना। एंड सिस्टम ट्रेलिंग आके 3022 पे रख लेना। 100 pips take home should be compulsory in gold। नहीं नहीं यू चिल आउट मैम, चिल आउट। मैं अभी ऐड ऑन क्वांटिटी देखूंगा ही नहीं, मेरा सेशन है 5 मिनट। Everyone keep one thing in mind: fearless trading with following the right risk management. With that, emotionless trading, जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not a quality of the traders. Carry the poker face in the directions of the mathematical numbers, following the risk to reward and the supply and demand. Trade patience-fully, impatience-full trade. FOMO trading, running candle trades is not allowed in TTS. Make sure to build the mindset before executing the trades. And जो भी नए लोग हैं, please do the back testing for 2 years, 1.5 years of forward testing, 1 month of live analysis, then small amount execution to build the confidence. Then whatever the real value you want to get into the market, you can bring it into the market and follow the proper risk management and be in the trades. Protect your capital, don't blow your capital। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नितेश साइनिंग ऑफ।